बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। Before going into a too much detail, I just want to introduce myself. My name is Umer Farooq. I have done my master's in computer science, and recently I am doing work as lecturer and researcher in the Department of Computer Science and Artificial Intelligence at Sir Syed Case Institute of Technology. My research area is artificial intelligence, natural language processing, and machine learning. But my main core research is on the topic of uh, text classification, where there are certain topics such as fact news detection, sentiment analysis, and medical report classification. But today we should be discuss about fake news detection. So in which we will be discussing that what is basically a fake news detection and how it can be spread over the internet and how we can be detected by using a machine learning models. Now, this is the outline of the whole discussion, in which will be discussed first about some introduction, then what is basically a fake news detection, and then there are certain implication which was occurred in the past, and then dataset exploration, then there are certain NLP models, then methodology, and then methodology charts, and after that we should be discuss some tools and techniques which will be used in this topic, and then at the end conclusion. Now everyone should know that the social life of everyone has progressed and is totally dependent with the online social network, because nowadays, as you know, that everyone uh, is too much interested in social network. So this social network system has have a great effect in the field of trade and grassroots organization. There are large volumes of data which is available on the internet, and social network sites are the main common platform that allows the user to share their reviews, to share their contents in order to take their an interest in social networking. But due to a spreading of wrong information that create a negative effect on our community, which we call it a fake news. ठीक है, जिस तरह नॉर्मली आपने देखा होगा कि रिसेंटली जो है हर बंदा सोशल नेटवर्किंग के साथ जो है वो डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इस डिपेंडेंसी की वजह से सोशल नेटवर्क जो है इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है इन द फील्ड ऑफ ट्रेड, either science, either in other organization like this. So a large of जो हमारे पास डेटा है, वॉल्यूम ऑफ डेटा that is available on the internet. ठीक है, so social networks allows every user that he should share their contents, their everything in the social network. ठीक है, but there are certain flaws. The first clause is the spreading of a wrong information which create a negative effect on our community, and we call it like a fake news detection. Now, what is basically a fake news detection? Fake news is basically a news articles or content which is created with a false information in order to mislead readers and spread false claims. This fake news is created by there are certain people who created this fake news for such a various reason, like for financial or like for popularity or to gain some political reasoning. So users in social media, they trust the people, so they share and like their content and articles, but they don't find out the reality of that articles, that either this articles or blogs are real or fake. Now, there are certain cases which was happened in the past, like Morgan Freeman was declared as dead in 2010 by CNN news channels, according to some tweet. But later on, they were reported that this news was a wrong news or fake news, so he was not dead. So Jackie Chan was also declared as dead, which was also a fake news. Similarly, there are certain other rumors which is spread over the internet about US election,
So nowadays in this recent emerging technologies area, uh, big companies like Facebook, Google, they want to spend a lot of money in this field in order to get real fact of news, to increase their revenues for advertisement. ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि फेसबुक हो गया, आपकी गूगल्स हो गई, ठीक है, ये जितने भी आपकी बड़ी कंपनीज है, दे आर टेकिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस एरिया. वाई? बिकॉज दे वांट टू इंक्रीज देयर रेवेन्यू. ठीक है, वो अपने रेवेन्यू को जो है वो इंक्रीज करना चाह रहे हैं. ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि एक पोस्ट जितनी ज़्यादा शेयर होती जाती है, वो टॉप ऑफ द लिंक, टॉप ऑफ द वेबसाइट के ऊपर वो आना शुरू हो जाती है. तो जैसी जैसी कोई भी आर्टिकल ऊपर आना शुरू हो जाता है, तो उसका बेनिफिट जो है उसके जो भी शेयर करने वाले हैं उनको जो है वो बेनिफिट्स मिलता है. तो इसलिए बिग जितने भी आपके गूगल्स हैं, आपके फेसबुक है, दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी इन दिस field. So that's why this is a too much hot topic. Now अब फेक न्यूज़ डिटेक्शन के अंदर बेसिकली आपका डेटा सेट किस फॉर्म के अंदर होता है. ठीक है, एज वी नो दैट फेक न्यूज़ डिटेक्शन जो है दैट्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. So this natural language processing means to process any language from a machine is called natural language processing. ठीक है, बेसिकली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या चीज़ है कि जब भी आप एक लैंग्वेज को मशीन के थ्रू प्रोसेस करें, तो हम उसको कहते हैं कि ये दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म में है, चाहे वो किसी और लैंग्वेज के अंदर है, जिस लैंग्वेज के अंदर भी है. तो जो नॉर्मली आपका आर्टिकल्स हैं, आपके डेटा ऑन द वेबसाइट, डेटा इन नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्म. ठीक है, न्यूज़ आर्टिकल्स आपके होते हैं. ठीक है, so that news article will be labeled as either fake, either real. ठीक है, तो वो न्यूज़ आर्टिकल्स जो है वो लेबल्ड करने होते हैं कि क्या वो फेक है या न्यूज़ है, in order to train the machine learning model that should be able to predict for the future results. ठीक है, अब ओपन सोर्स डेटा सेट्स आपके पास अवेलेबल है ऑन द इंटरनेट, लाइक ऑन केगल के ऊपर अगर आप जाएं तो आपको नंबर ऑफ डेटा सेट्स मिल जाएंगे. सिमिलरली ऑन अदर वेबसाइट्स के ऊपर भी आपको जो है लॉट ऑफ डेटा सेट जो है वो आपको मिल जाएंगे. अब NLP के मॉडल्स जो हैं वो कौन कौन से मॉडल्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू mining of the text. ठीक है, R for classification of the text. So there are certain models of NLP like TF, IDF. ठीक है, which we also call it term frequency or inverse document frequency. Uh, the next model is backward model, word to vector, और जो लेटेस्ट मॉडल्स फास्ट टैग्स विच इज़ क्रिएटेड बाय फेसबुक. ठीक है, फेसबुक ने ये न्यू लेटेस्ट मॉडल क्रिएट किया है. और उसके बाद ग्लफ जो है, ठीक है, ये गूगल का एक लेटेस्ट मॉडल है जो रिसेंटली चल रहा है. ठीक है, बट दिस टू मॉडल विल बी यूज एज ट्रांसफरिंग लर्निंग. ठीक है, इसको हम एज अ ट्रांसफरिंग लर्निंग के लिए यूज़ करते हैं. ट्रांसफरिंग लर्निंग मीन्स कि इसके अंदर ऑलरेडी आपकी एक डिक्शनरी बना दी गई है नंबर ऑफ वोकैबुलरीज की. तो उस वोकैबुलरी से हम जो है जो भी टेक्स्ट को आप प्रोसेस करते हैं उसको इन वोकैबुलरीज के साथ इसकी सिमेंटिक्स चेक की जाती है. तो उसकी बेसिस के ऊपर वो प्रिडिक्शन करता है मशीन लर्निंग मॉडल कि आइदर दिस न्यूज़ या फेक देयर. ठीक है, अब टर्म फ्रीक्वेंसी, बैक ऑफ वर्ड, वर्ड टू वेक्टर, इन तमाम मॉडल्स का मेन पर्पस क्या है. ये तमाम मॉडल्स आपकी जो टेक्स्ट डेटा है इसको एज अ वेक्टर की फॉर्म में जो है ये कन्वर्ट करते हैं. क्योंकि आपका मशीन लर्निंग मॉडल जो है विच यूज फॉर क्लासिफिकेशन, दे डोंट अंडरस्टैंड नॉर्मल टेक्स्ट. understand machine learning model just understand in the form of a numeric values. ठीक है, so first we should be convert this text into a numeric values. So that numeric, for this numeric values we use a NLP models like term frequency, back and forth model, word to vector, and recently latest model which we call it like a fast tags and glove. ठीक है, आप इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट एवरी वन हैज़ सर्टन फ्लॉज एंड सर्टन बेनिफिट्स. But the most important model, the most can be said that a good with good results model is that is glove and word to vector as well as. अब मेथडोलॉजी आपने क्या अडॉप्ट करनी है जब भी अगर आपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. ठीक है, या उसको डिटेक्ट करना है कि क्या ये न्यूज़ आपकी जो है फेक है या रियल है. तो सबसे पहले जो प्रोसेस है दैट इज़ टू कलेक्ट द रॉ डेटा सेट. आपने सबसे पहले डेटा सेट को कलेक्ट करना है. अब नाउ द क्वेश्चन इज अराइज वेयर दिस डेटा विल बी केम फ्रॉम. ठीक है,
डेटा सेट जो है वो आपकी डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर पड़ा हुआ है, या तो आप बिल्ट इन डेटा कलेक्ट कर लें और नए डेटा के लिए आप उसके ऊपर प्रोडक्शन करें, ठीक है। तो उसके लिए फिर अगर आपने एक वेबसाइट से ऑनलाइन डेटा उठाना है फॉर प्रोडक्शंस के लिए, ठीक है, तो उसके लिए आप यूआरएल लिंक्स जो है वो आप यूज़ करेंगे इन पाइथन्स के अंदर, वहाँ से वो डेटा को एक्सट्रैक्ट करके फॉर प्रोडक्शन के लिए आपके पाइथन एडिटर के ऊपर ला के लोड कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपका होता है, ठीक है, दैट इज़ प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। अब प्री प्रोसेसिंग जो डेटा किया है उसको हम कैसे करते हैं, ठीक है। देयर आर सर्टेन टेक्निक्स विच इज़ यूज इन एनएलपी, ठीक है। एनएलपी के अंदर आपकी डिफरेंट टेक्निक्स है जिसके थ्रू आप उस टेक्स्ट को जो है वो क्लीन करते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर सबसे पहले जो है वो आप स्टॉप कोड रिमूवल करते हैं, जिसके अंदर आप जितने भी आपके आर्टिकल्स हैं, आपके हो गया, दी हो गया, आपके हेल्पिंग वर्ब हो गए, ये तमाम आपने टेक्स्ट में से रिमूव कर देते हैं। उसके बाद उसकी आप टोकनाइजेशन करते हैं, आप उसको वर्ड्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये उसकी टोकनाइजेशन होती है। तो उसके लिए एनएलपी के अंदर प्रोसेसिंग के स्टेप्स डिफाइन हुए पड़े हैं, ठीक है। स्टॉप कोड रिमूवल हो गया आपका, जो है टोकनाइजेशन हो गई, आपकी लिमिटाइजेशन हो गई, ठीक है। ये तमाम स्टेप्स जो है ना प्री प्रोसेसिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। अब इस चीज़ को प्री प्रोसेस करने के लिए पाइथन्स के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको NLTK का जो है पैकेज मिलेगा, आपने वो इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप उसके तमाम फीचर्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब जब आप डेटा सेट को क्लीन कर दें, उसकी प्री प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद आप उस टेक्स्ट डेटा को आपने कन्वर्ट करना होता है इनटू अ वेक्टर फॉर्म, ठीक है। सो फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ अ वेक्टर फॉर्म इनटू अ वेक्टर फॉर्म वी यूज NLP models. That NLP model we have discussed in the last slide, that either you can use term frequency, either you can use back-of-word model, either you can use word to vector, or either you can use a pre-trained model which we call it a fast text or glove, ठीक है। उसके बाद जब आपके ये डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ वेक्टर कन्वर्ट हो जाते हैं, तो देन यू शुड बी अप्लाई इनटू अ मशीन लर्निंग मॉडल, ठीक है। उसके बाद आपने इसको मशीन लर्निंग मॉडल्स के अंदर अप्लाई करना होता है। अब मशीन लर्निंग मॉडल्स क्या करते हैं, ठीक है, जो भी आपके वेक्टर होता है वो मशीन लर्निंग मॉडल जो है उसके ऊपर प्रेडिक्शन परफॉर्म करता है बाय यूजिंग प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स टेक्निक्स, ठीक है। उसके बाद जो आपके रिजल्ट्स आते हैं आप उसको इवेलुएट करते हैं, एंड आफ्टर इवेलुएशन यू कैन बी विजुअलाइज। अब ये हमारे पास मेथडोलॉजी चार्ट है। सबसे पहले आपका आएगा डेटा सेट, ठीक है, जो आपके आर्टिकल्स होंगे, न्यूज़ आर्टिकल्स आपके हैं, ठीक है, एंड दैट न्यूज़ आर्टिकल्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। उसके बाद आपने उस आर्टिकल्स को बेसिकली प्री प्रोसेसिंग करनी है। अब प्री प्रोसेसिंग के अंदर आपने उसकी क्लीनिंग करनी है, जिसमें से आपने उसके तमाम आर्टिकल्स को रिमूव करना है, ठीक है, और उसके बाकी जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसके आप कह सकते हैं कोमास वगैरह हो गए, ठीक है, इन्वर्टेड कोमास हो गए, फुल स्टॉप, ये तमाम चीज़ें आपने उसमें से रिमूव करनी है। तो उसके लिए सर्टेन प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स हैं NLPs के अंदर, ठीक है। द मेन स्टेप जो उसके अंदर है वो आपकी टोकनाइजेशन कहलाती है एंड स्टॉप रिमूवल। अब प्री प्रोसेसिंग के बाद आपने फीचर एक्सट्रैक्शन करनी होती है, ठीक है। वो मेन वर्ड्स, वो कीवर्ड जिसकी बेसिस के ऊपर आपने ये प्रेडिक्शन करनी है कि बेसिकली ये फेक है या फेक नहीं है। तो इस प्रोसेस को हम बेसिकली फीचर एक्सट्रैक्शन कहते हैं, कि वो कीवर्ड्स आपने निकालने होते हैं टेक्स्ट में से जिसकी बेसिस के ऊपर आप प्रेडिक्शन करते हैं। So that term we call it a feature extraction. अब feature extraction के लिए NLPs के अंदर बेसिकली आपके जो मॉडल्स हैं, ठीक है, टर्म फ्रीक्वेंसी और इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी आपको हो गया, बैक ऑफ वर्ड मॉडल हो गया, आपको वर्ड टू वेक्टर हो गया, जो अभी लेटेस्ट प्री ट्रेन मॉडल है, ठीक है, फास्ट टेक्स्ट एंड ग्लव, ठीक है। अब फीचर एक्सट्रैक्शन के बाद आपके पास फीचर्स आ जाएंगे, और ये फीचर्स आपके इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर होंगे, इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज होंगे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यू कैन बी एबल टू अप्लाई फॉर अ क्लासिफिकेशन मॉडल और फॉर अ मशीन लर्निंग मॉडल को आप वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। लाइक जैसे कि यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है, ठीक है, 5 डिफरेंट क्लासिफिकेशन मॉडल मशीन लर्निंग के, जिसमें पैसिव अग्रेसिव क्लासीफायर है, लॉजिस्टिक रिलेशन है, रैंडम फॉरेस्ट है, डिसीजन ट्रीज है, मल्टीनोमियल नाइफ बेस हो गया, ठीक है।
तो यहाँ से वो आपको क्लासिफाई करके रिजल्ट दे देगा कि आइदर दिस आर्टिकल इज अ फेक और रियल। उसके बाद आपने रिजल्ट्स की इवैल्यूएशन करनी होती है और उसके बेसिस के ऊपर आप उसकी एक्यूरेसी जो है वो मेंशन करते हैं और उस एक्यूरेसीज के बेसिस के ऊपर फिर आप उसकी विजुअलाइजेशन करते हैं। तो ये बेसिकली ओवरऑल प्रोसेस है एक फेक न्यूज़ की डिटेक्शन के लिए। अब टूल्स एंड टेक्निक्स आप क्या यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। द मोस्ट प्रेफरेबल इज़ पाइथन 3.5 यूज़ करें या उससे अबव वर्जन यू कैन बी यूज इट, अंडरस्टैंड, बिकॉज मोस्टली लाइब्रेरीज जो है वो 3.5 के ऊपर आपको अवेलेबल है, ठीक है, आपको इजीली मिल जाएगी। लेकिन अगर इससे प्रीवियस वाले आप वर्जन यूज़ करेंगे तो शायद लेटेस्ट जो भी लाइब्रेरी है वो उनको सपोर्ट नहीं करेगी। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लिनक्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई बी मोस्टली प्रेफर टू यू दैट बी यूज लिनक्स बिकॉज यू विल नॉट बी फेस एनी प्रॉब्लम वाइल इंस्टॉलिंग योर पैकेजेस और लाइब्रेरीज, ठीक है। और पैकेजेस के लिए या एडिटर के लिए यू शुड यूज़ एनाकोंडा एडिटर, यू शुड यूज़ जुपिटर आप यूज़ करें, ये सबलाइम टेक्स्ट यूज़ करें, ठीक है। और आपकी रैम की जो स्पेसिफिकेशन है दैट शुड बी एटलीस्ट 4 GB आपकी होनी चाहिए। अब जो इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज़ है पाइथन्स के अंदर, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है दैट इज़ पांडास, ठीक है। पांडास बेसिकली क्या है, ठीक है, पांडास को हम यूज़ करते हैं कोई भी डाटा सेट अगर आपने लोड करना है या एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम ऑनलाइन वेबसाइट से, ठीक है, तो उसको एक्सट्रैक्शन के लिए वी कैन बी यूज़ पांडास दैट इज़ अवेलेबल इन पाइथन, ठीक है। उसके बाद साइकिट लर्न की लाइब्रेरी है, ठीक है, दैट इज़ यूज फॉर स्प्लिटिंग द डेटा से, ठीक है। आप अपने डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं टू अ ट्रेन एंड टेस्टिंग बिकॉज वी शुड बी परफॉर्म training on 80% or 70% of the data and the other 30% we have applied on for prediction now for testing। तो इसलिए आप साइकिट लर्न जो है ये साइंटिफिक लाइब्रेरी है पाइथन की, इसको आप स्प्लिटिंग ऑफ डेटा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर मशीन लर्निंग के मॉडल्स भी इम्प्लीमेंट है, सो यू कैन बी इजीली इंपोर्ट मशीन लर्निंग मॉडल फ्रॉम दिस लाइब्रेरी। उसके बाद NLP के टूल जो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का, ठीक है, ये टूल किट आपने इंस्टॉल करनी है और इंस्टॉल करने के बाद आप इसको यूज़ करेंगे NLP के मॉडल्स के लिए और NLP की प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। जो आपने डेटा सेट को क्लीन करना है प्री प्रोसेसिंग स्टेप और उसके बाद फिर आप वेक्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो आप मॉडल्स अप्लाई करेंगे लाइक बैक ऑफ फुल मॉडल, वर्ड टू वेक्टर, अंडरस्टैंड, एंड ग्लव। लेकिन ग्लव को आपने अलग से इंस्टॉल करना है दैट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड इन NLP के, ठीक है। आप उसको सेपरेटली जो है वो इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद विजुअलाइजेशन के लिए हम मैटप्लॉटलिब जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। मैटप्लॉटलिब को आपने इंपोर्ट करना है और इंपोर्ट करने के बाद आप उसके थ्रू डिफरेंट विजुअलाइजेशन जो है पाइथन के अंदर आप कर सकते हैं। अब ओवरऑल डिस्कशन का जो मेन कंक्लूजन था दैट इज़ ये कि द इनहेरेंट नेचर ऑफ द इंटरनेट फेक न्यूज़ गेट सर्कुलेटेड इफेक्टिवली विदाउट बीइंग आइडेंटिफाइड एज फैक्ट, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर इनहेरेंट नेचर, ठीक है, वी कैन नॉट बी डिटेक्टेड एज आइदर इट इज फेक न्यूज़ और नॉट, अंडरस्टैंड। सो बिकॉज इट्स चेंज इट्स नेचर, जब एक चीज़ अपना नेचर चेंज करती है तो वी कैन नॉट बी राइट इट अ स्टैटिक कोड फॉर डिटेक्शन। तो उसके लिए द मेन थिंग विच वी कैन बी यूज, वी कैन बी use the mechanism of machine learning, understand, in order to provide us some dynamic solution, ठीक है। And other we can be also be study and provide us some NLP techniques which can be used for task classification and for fake news detection। I hope आपको क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली फेक न्यूज डिटेक्शन क्या है, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन please I'll be give you my WhatsApp so you can be text me, I'll be give your answer of your own question. Thank you so much, Priyanka.